Namaskar dosto. I am Purnima from Fertility Dost, and once again welcome to another interesting informative session from our side. आप सबके लिए. And for this special session I want to thank UNS बिकॉज यूएनएस ने आज आपके लिए बहुत सीनियर डॉक्टर को अरेंज किया है फॉर दिस आई कैन से दैट नून इवनिंग सेशन. सो स्टे ट्यून एंड अपने क्वेश्चंस अपने सवाल ज़रूर ध्यान में रखिए. ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए एंड इफ़ यू फील दैट कि नहीं सबके सामने कैसे पूछूं मैं, तो जस्ट लेट अस नो. यू कैन सेंड अस अ मैसेज ऑन आवर ऑफिशियल नंबर, और अगर आप में से किसी के पास मेरा पर्सनल नंबर है तो आप वहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं. One very important information for you viewers that this month we are celebrating Yoga Month. सबको पता है नेशनल योगा डे है on 21st. तो any queries related to free couple yoga sessions please let us know. एंड चलिए आज हम बात करते हैं अर्बन लाइफस्टाइल की. हमने बातें की कि हमारा लो एएमएच है, हमारा पुअर ओवेरियन रिजर्व है. इवन पिछले लास्ट वीक वी टॉक्ड अबाउट मेल इनफर्टिलिटी आल्सो. बट आज हम बात करते हैं लाइफस्टाइल. क्या लाइफस्टाइल सच में आपकी फर्टिलिटी को इम्पेक्ट करता है? एंड इट्स नॉट कि यू आर अ फीमेल दैट यू नीड टू टेक स्पेशल केयर अबाउट योर लाइफस्टाइल. अगर आप मेल हैं देन ऑल्सो. और उसका इम्पेक्ट क्या है किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं, और अगर हम ठीक कर लेते हैं तो क्या ये फर्टिलिटी की जर्नी बहुत आसान हो जाती है? सो these questions and answers from a very senior known doctor of Delhi NCR. So let me call her first on the main screen and then I'll informally introduce the doctor. Namaskar, Dr. Neelam, and welcome to Fertility Dose. Thank you. So viewers, today we have very senior doctor from Delhi with us, Dr. Neelam Banerjee. Dr. Neelam Banerjee is a senior IVF and endoscopic surgeon. इसीलिए अगर आपके सवाल लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी से भी रिलेटेड है देन प्लीज डोंट हेजिटेट टू पोस्ट योर क्वेरीज ऑन कमेंट बॉक्स. Dr. Neelam has more than 22 years of experience in this field. She has more than 50 publications in both national and international journals. हर एक्सपर्टाइज जैसे कि मैंने आपको बताया एंडोस्कोपी लेप्रोस हिस्ट्रो दोनों एंड इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट. सो आज हम इन सब टॉपिक से रिलेटेड डॉक्टर नीलम के साथ बात करेंगे. एंड डॉक्टर नीलम इज बेस्ड इन ग्रेटर नोएडा. She has Banerjee's Gynec Endoscopy and IVF clinic. So Noida people, Delhi people, you just don't wait or don't hesitate to meet her if and when the need arises. So once again, thank you, Dr. Neelam, for joining us. एंड जैसे कि आपके साथ आपके लिए हम कहेंगे कि वी सिलेक्टेड अ टॉपिक रिलेटेड टू अर्बन लाइफस्टाइल. सो वी रियली वांट टू नो हमारे व्यूअर्स और हम कि क्या सच में ऐसा है लाइफस्टाइल जो हम फॉलो कर रहे हैं या जो हमारे एक डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है, दिस इज रियली इम्पैक्टिंग आवर फर्टिलिटी इक्वेशंस और नॉट? Thank you, Purnima. Actually, in our country, population explosion is a big problem. But on another hand, infertility is also fast increasing. Like if we go by number, तो Indian infertile couple they make approximately 25% of all infertile couple world over. So आप देख सकते हैं कि ये एक huge number है. And infertility की problem urban areas में ज़्यादा है as compared to rural areas. And there are many factors associated with it, like foremost is pollution, increasing stress level, delaying age of marriage and fertility, and then lack of support system, nuclear family, etc. So if we talk about pollution, then pollution, due to pollution, the toxins or the dangerous toxins which we inhale, they are just not bad for our lungs. They are bad for overall health of a person, like be it male or female. So ऐसा नहीं है कि pollution की वजह से आपके lungs affect हो रहे हैं और आपको lung related problem हो सकती हैं, but overall health भी affect होती है because वो toxins they from lung they go to their bloodstream and they damage each and every organ, and that includes reproductive organs also.
like they damage their ovaries, and in male they can damage their testes. Like in our OPD we see so many females who are young, they are less than 30 years, 28-29 साल की हैं, 30 साल के आसपास एज है, बट द AMH लेवल इज वेरी लो. So राइट, this, हाँ, so this is pollution has to, मतलब this is an important factor, because इतना पोल्यूशन, इतने टॉक्सिन्स आपको किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, वो हर चीज आपको देखने में पता नहीं चलता है, बट वो अंदर ही अंदर उस चीज को अफेक्ट करते हैं. एंड इसके अलावा वॉट एवर फूड वी आर ईटिंग, लाइक वी कैन टेक फूड फ्रॉम अ गुड प्लेस, बट वी डोंट नो हाउ मेनी पेस्टिसाइड्स आर देयर, उनमें कितने पेस्टिसाइड्स हैं, कितने टॉक्सिन्स हम अंदर ले रहे हैं, जो कि आपका ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. सो एंड इसके साथ साथ इंक्रीजिंग स्ट्रेस लेवल इन अर्बन एरियाज, लाइक राइट, स्ट्रेस लेवल पहले, अभी भी रूरल एरियाज में मेनली स्ट्रेस इज ऑन द मेल partner, or maybe the male of the family. But in urban areas, like there is a gender equality, that is good, I support it, it's not that it should not be there, but हर चीज के साथ एक फ्लिप साइड भी होता है, तो उसके साथ साथ स्ट्रेस लेवल इवन इन वुमेन इट इज इंक्रीजिंग. एंड समटाइम्स द स्ट्रेस लेवल इन वुमेन इज मोर, बिकॉज they have to maybe because of their studies, or maybe because of their work schedule, sometimes they have to manage house and अपना काम सब मैनेज करने में उनका स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ गया है, क्योंकि अभी आजकल कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें कि लेडीज आदमियों से कम है, वो हर चीज में उनके साथ हैं, प्लस उनको घर भी संभालना है साथ में. तो ये स्ट्रेस लेवल, जो स्ट्रेस के हॉर्मोन्स होते हैं, दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम द ब्रेन, एंड योर फर्टिलिटी हॉर्मोन्स FSH, LH, they are also secreted from your brain. So all those hormones, they lead to hormonal imbalance in your body. If stress, little bit of stress level is fine, but if stress level is too much, then hormonal imbalance होने लगता है बॉडी में. हमारे पास कितनी लेडीज आती हैं जो कि as such there will be no reason, but periods irregular हो रहे हैं, कभी कभी जल्दी जल्दी पीरियड आ रहे हैं, कभी डिले होके आ रहे हैं. सो बेसिकली फॉर अ नॉर्मल कंसेप्शन या नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए एक रेगुलर साइकिल होना भी जरूरी है, बिकॉज इन अ रेगुलर साइकिल, इन द मिड ऑफ साइकिल, वंस ओवम इज रिलीज्ड, सो हर लेडी में हर मंथ में एक बार फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी होती है, मतलब उन एग में फॉर 2-3 days. बट इफ द साइकिल इज टू हेवायर, इफ इट इज टू इरेगुलर, दैट मीन्स दे आर हैविंग इरेटिक ओवुलेशन. एंड समटाइम्स अगर ओवुलेशन इतना इरेटिक है तो उसका क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है, तो दैट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी इनडायरेक्टली. इसके राइट, साथ साथ स्ट्रेस के साथ साथ many women they have erratic sleeping and eating habits, कि लंबे लंबे वर्किंग आवर्स हैं, खाने का टाइम नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, दे हैव ऑल द एक्सक्यूज कि अब एक्सरसाइज का टाइम नहीं है. एंड जब वो हफ्ते में 5-6 दिन 12-12 14-14 घंटे काम कर रही हैं, एंड समटाइम्स वीकेंड में देन पार्टी एंड लॉट ऑफ जंक फूड, एंड दीज थिंग्स दे ऑल्सो आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. अब भगवान ने एक सिस्टम बनाया है कि आपको रात को सोना चाहिए, दिन में जागना चाहिए, इस तरीके से खाना चाहिए, तभी आपकी बॉडी भी प्रॉपर ढंग से चलती है. अगर आप राइट, बॉडी को ज्यादा खींचेंगे, ज्यादा स्ट्रेस में डालेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट अब हम कितनी लेडीज देखते हैं, लाइक इन इंडिया 1 in 4 वुमेन हैज प्रॉब्लम ऑफ PCOD. राइट, PCOD is nothing but a lifestyle problem. It is associated with erratic sleeping and eating habits, lot of junk food, even incidence of smoking. Alcohol is increasing in even in women. I'm not राइट, talking about only male. So all these things lead to weight gain. And ladies में hormonal imbalance जो होता है, that is through fat cells. सो जितना फैट बढ़ता है उतना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उतना पीरियड्स गड़बड़ होते हैं. एंड मोस्टली सच गर्ल्स और लेडीज दे हैव डिलेड साइकिल्स. सो डिलेड साइकिल मीन्स उनका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आएगी. सो ऑल दीज थिंग्स दे लीड टू इनफर्टिलिटी, एंड दे आर मोर इन अर्बन एरियाज, बिकॉज अभी भी रूरल एरियाज में तो एक मेन रोल एक लेडी का माना जाता है कि भाई 21-22 साल के होते ही शादी कर दो, या तुम घर संभालो और बच्चे पैदा करो. बट दैट इज नॉट ट्रू टू अर्बन एरियाज. So areas, right, that is the main thing. And apart from that, delaying age of marriage and childbearing, बहुत सारी ladies हैं because of their career or because of some other things, they keep on delaying marriage. And sometimes even if they are married,
बिकॉज काफी सारे न्यूक्लियर कपल्स हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, दे डोंट हैव सच सपोर्ट सिस्टम, उनका सपोर्ट सिस्टम पुअर है, इवन इफ दे वांट टू हैव बेबी दे फील कि दे आर नॉट अभी capable, or maybe they won't be able to have baby, उनको देखेगा कौन, बच्चे को कौन देखेगा, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और मे बी द अर्निंग इज नॉट दैट मच, सो बिकॉज एवरीथिंग इज कॉस्टली सब चीजों का आजकल दो दो Yes. जने कमा रहे हैं, इवन देन देयर इज प्रॉब्लम. So Right. these things they lead to, because in ladies there is a biological clock. For men it is not that problematic, but for ladies they should ideally complete their family before the age of 35, बिकॉज लेडीज में जितने एग्स के साथ वो बॉर्न होती हैं, वो नंबर ऑफ एग्स जो होते हैं वो टिल मिनोपॉज चलते हैं. सो उनमें एक कट ऑफ एज लिया गया है 35. बियॉन्ड दैट एग्स की एजिंग होने लगती है और उनकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम होने लगती है, प्लस नंबर ऑफ एग्स भी कम होने लगते हैं. एंड बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड स्ट्रेस एंड ऑल दोज थिंग्स, जो चेंजेस पहले हम 35 या 38 में देखते थे, वो आजकल 30 एंड 32 में होने लग गया है. तभी नहीं तो एएमएच लेवल एक 30 ईयर की गर्ल में इतना कम नहीं होना चाहिए लेडी में, बट वी सी लॉट ऑफ फीमेल लाइक दैट. सो ये सब चीजें हैं जो कि अर्बन लाइफस्टाइल में मतलब के साथ साथ आती हैं. मतलब आप कुछ अच्छा करने के साथ साथ कुछ ये फ्लिप साइड्स भी हैं जो कि अर्बन लाइफस्टाइल का पार्ट एंड पार्सल आप कह सकते हो, कि उसके लिए मतलब उसके साथ ये चीजें हैं. एंड डॉक्टर नीलम, सबसे इंटरेस्टिंग इस सब में था पोल्यूशन, बिकॉज वी नो कि अगर स्ट्रेस है तो कुछ, बिकॉज स्ट्रेस होते ही आपका सबसे पहले इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो आपके पीरियड साइकिल पे देखने को मिलता है. सो वी कैन चेक ऑन दिस पॉइंटर, बट अगेन पोल्यूशन जैसे आपने बोला, आई थिंक इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अ कॉमन पर्सन टू सी कि हाँ भाई ये पोल्यूशन जो है मेरे फर्टिलिटी के ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या कहिए फर्टिलिटी क्वेश्चन को अटैक कर रहा है. दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अ कॉमन पर्सन टू नोटिस. अब लोग हैं, लोग मतलब दूर दूर ट्रैवल करके जाते हैं जॉब के लिए, इतनी इतनी देर तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, सबकी गाड़ियां ऑन है, इतना स्मोक है. सो जो स्मोकर्स नहीं भी हैं वो भी कितना आप इनहेल कर रहे हो टॉक्सिन्स. सो लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है. इसीलिए हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी धीरे धीरे अर्बन एरियाज में कम हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम अफेक्ट होता है ना. एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड सिस्टम की बाकी सब तो गड़बड़ होगा, ये बिल्कुल बढ़िया रहेगा. तो हर चीज मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट होता है इन चीजों का. मतलब दीज आर द रियल इश्यूज विच शुड बी एड्रेस्ड, बट इन चीजों को कोई इतना तवज्जो नहीं देता है, गवर्नमेंट्स हो या जो भी है. मतलब एक इंडियन मेंटालिटी, कोई भी अपना ऑन है गाड़ी तो ऑन ही रखेंगे, या कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं. कूड़ा बाहर डालना, अपना घर साफ कर लिया बाहर डाल दिया, नाली खुली हुई है, मतलब जो भी है बहुत सारी फैक्टर्स हैं, तो ये सब अफेक्ट करते हैं. आई कांट हियर यू. हेलो. Sorry. हाँ जी. हाँ. So we can say that these small things which are impacting environment, they are also harming our reproductive system. तो अगर आप बाहर पोल्यूशन में जा रहे हैं, इट्स नॉट दैट कि आपके लंग्स ही इफेक्ट हो रहे हैं. इट कैन कॉज some we can say that some bad effect on your reproductive system also. Long term it is bad, maybe 1 or 2 days not bad, but long term Not if you're continuously exposed to such environment, so अगर आपका Mhm. डे नाइट डे शेड्यूल है, तो over period of time these things affect fertility or whole of your body. So डॉक्टर नीलम, कैन वी से कि अगर हमारा लो एएमएच है या हमारा वी कैन से दैट बिल्कुल ही ओवेरियन रिजर्व इज रियली लेस, सो वी कैन से दैट change of lifestyle can have positive effect on that. देखो, always prevention is better than cure. मतलब एक, because all these things, there are certain things which are not in your hand, like if something has happened you can further slow it down, but sometimes it is difficult to revert things.
लाइक अगर बाल व्हाइट हो जाए अंदर से तो वो व्हाइट होगा ही, उसको ऊपर से ही आप ब्लैक कर सकते नहीं हो। कर सो सकते, इसी राइट राइट। तरह से जितना हो गया है उसको रिवर्ट करना सम टाइम इज डिफिकल्ट, बट एटलीस्ट ऑब्वियसली changing your lifestyle or having healthy lifestyle can definitely slow down that process, and to some extent it can be reverted, but definitely it will not revert to the best level, but maybe little bit improvement can be there, or at least deterioration can decrease। नहीं, ये राइट। है। सो बेसिकली जो हो गया है उसको एकदम से रिवर्ट तो नहीं किया जा सकता, बट ठीक है, थोड़ा बहुत जो है उसको आप थोड़ा बहुत रिवर्ट कर सकते हो और आगे बढ़ने से रोक सकते हो, दैट मच कैन बी डन। हाँ। सो जब भी हमारी बात आती है फर्टिलिटी की, एंड दिस थिंग इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली पीरियड्स, मंथली पीरियड्स, सो एट टाइम्स हमें कुछ चेंजेस दिखते हैं पीरियड फ्लो में, या कहिए कि पीरियड डिले हो रहे हैं, या पीरियड साइकिल का जो गैप होना चाहिए वो कम हो रहा है। तो ये बहुत कॉमन है, जो कि वी आर गेटिंग मेनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस। सो वन ऑफ दिस, आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन: less bleeding means less fertility and menopause is near. Is it really so? लेस ब्लीडिंग, it depends ki what is the age of a person, and then less fertility, less bleeding means less fertility. It may not be menopause always, because then we have to do battery of investigation and look for the cause of less bleeding, बिकॉज Hmm. अगर किसी का लेस ब्लीडिंग हो रहा है तो इधर इट कैन बी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, या फिर लोकल आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका पीरियड कम आ रहा है। बट इफ योर हार्मोन्स आर फाइन, लाइक FSH LH ठीक है, AMH ठीक है, तो इसका मतलब वी हैव टू लुक फॉर द लोकल कॉज, बिकॉज इन आर कंट्री एंडोमेट्राइटिस है, इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग जिसका मतलब होता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। अगर बार बार किसी का रिपीटेड DNC की वजह से या किसी और वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग डैमेज हो गया है तो तब भी पीरियड कम आ सकता है। और tuberculosis and all that is also very common in our country, so first of all, just like that we cannot label somebody who has less bleeding, and less bleeding का भी एक सब्जेक्टिव है। समटाइम्स somebody is having 3 days of normal period, सपोज उसका 5 दिन रहता था, अभी 3 दिन आ रहा है बट नॉर्मल आ रहा है, तो Hmm. इट इज नथिंग टू वरी। Less means suppose it is only spotting, or if it is less than 50%, like only 20% of the flow, और इंटरवेनिंग कोई प्रोसीजर तो नहीं हुआ है, कोई मेडिसिन पे तो नहीं है वो, ये सब चीजें देखना पड़ता है। मतलब इट डजंट हैव अ डायरेक्ट आंसर कि इसका मतलब ये है, बट Right. on the other hand, all less period doesn't mean कि she is nearing menopause and all. We have to Right. see, visualize the patient, see the investigation, उनका FSH LH E2 क्या है, AMH लेवल क्या है, और उनका हिस्ट्रो मतलब और कोई ऐसा हिस्ट्री तो नहीं है, एंड इफ रिक्वायर्ड समटाइम हिस्ट्रोस्कोपी में बी done to rule out any adhesions, Asherman syndrome, or take biopsy and look for any endometritis or any other infection. Right. Hmm. सो वी कैन सजेस्ट दैट अगर आपके पीरियड्स शुरू से ही इसी पेस पे हैं, देन नथिंग टू वरी, और अगर ये रीसेंट चेंजेस हैं, देन प्लीज विजिट योर लोकल गायनी एंड गेट देम चेक कि ऐसा क्यों है। रीजन कुड बी मेनी, वी कैन से एट दिस पॉइंट, बट पर्टिकुलरली किसी रीजन को पिन पॉइंट करना एट दिस स्टेज इज नॉट पॉसिबल, सो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज रियली नेसेसरी। But it doesn't mean everybody who has less period doesn't mean that she is heading towards menopause. Right, right. There could be many underlying conditions also. Dr. Neelam, nowadays, I think we many females are facing issues of thyroid. So what you suggest for such patients? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अगर दिन में मैंने 10 लोगों से बात की तो उनमें से 6 लोगों को थायराइड का इशू होगा। Why this number is on the increase, and अगर है तो क्या कंसेप्शन में डिफिकल्टीज आ सकती हैं? थायराइड इज एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट, एंड यूजली इट इज द बेसलाइन टेस्ट जो कि हम हर लेडी का वैसे भी करते हैं। कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ आता है, और somebody who's planning pregnancy or infertility,
yeah, even during first month of pregnancy we always do the thyroid test, because thyroid agar aapka, and zaruri nahi hai, sometimes thyroid patient can be totally asymptomatic, but thyroid में जो gynae related problem में they can have irregular periods or menorrhagia, that could be one of the symptoms, और lethargy weakness ये हो सकता है. So basically pregnancy point of view से ये है कि it can lead to infertility also if it is too much raised. Like not all thyroid patient will face infertility, but Hmm. if it is raised then it should be corrected beforehand. सो वी कैन नॉट से कि नहीं नहीं आपका थायराइड टीएसएच आपका 10 है तो कोई बात नहीं, आप प्लान कर लीजिए प्रेगनेंसी के लिए. देन फर्स्ट इट शुड बी कंट्रोल्ड, बिकॉज इवन इफ शी कंसीव ऑन आई मीन टू से हाइपोथायरॉइड है, उनका टीएसएच रेज्ड है, एंड इफ शी कंसीव देन चांसेस ऑफ मिस कैरेज ऑल्सो इंक्रीजेस. एंड उसके अलावा बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट ठीक से हो, फॉर दैट थायराइड कंट्रोल इज वेरी मच असेंशियल, especially in first 3 to 4 months. Like as such, many labs have different values, but usually 5.5 is considered normal TSH. But during pregnancy, especially in first 3 months, we want to make it less than 3. So it has to be well controlled during pregnancy. So it should be done at first visit if she is pregnant, or if she's come for infertility, then also it should be done. Or anybody with any menstrual irregularity, she should also have thyroid tested. And is the treatment तो simple ही है, मतलब it is with medicine only. Right. Eltroxin is given, and that depends upon the level of TSH. And every morning, empty stomach, she has to take one tablet. And मत ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने टैबलेट खाया और खाने के 15 मिनट बाद आपने कुछ खा लिया. एटलीस्ट देयर शुड बी गैप ऑफ 30 to 40 minutes बिफोर यू टेक योर मील. Only then absorption of medicine happens. So Okay. some ladies they just have it empty stomach, then immediately they have tea or something, then it is medicine is not absorbed properly. So it Right. should be well And controlled. and Dr. Neelam, कितना frequently we need to check our thyroid levels? It all depends. Like if you are pregnant, then obviously more frequently, but Hmm. it's not mandatory to check it very frequently also, like every 2 weeks. Once you have started the medicine, it will not show effect before 3 weeks or 4 weeks. So it's not that you have started medicine and you start checking after 1 week, it will not show much drop in Okay. TSH. So ideally 3 to 4 week gap should be there Right. before you And if thyroid uh, tested. right. And we have few queries related to this कि डॉक्टर्स कई बार डोजेस कम ज्यादा करते हैं, तो व्हाट टू डू? डॉक्टर्स डोजेस अपने मर्जी से कम ज्यादा नहीं करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू योर टीएसएच लेवल कम ज्यादा करते हैं. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज देयर आर मेनी लेडीज, यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट थायराइड इज ऑन राइज. वी आल्सो सी सो मेनी लेडीज हु आर प्रेग्नेंट with thyroid, either they are already taking medicine, or in first visit when we get the TSH done it is usually raised, so we start the medication. So basically if she is not pregnant, then the adjustment of doses is done by endocrinologist or by physician. But during pregnancy we usually, because according to level we have to do sometimes, Right. because everybody doesn't respond to the medicine in the same manner. If there are 10 ladies with the same dose with the same TSH level, everybody will have different levels when we check it. So according to the report, level is adjusted. Our aim is to keep it under control in a range. Like if she is pregnant, that TSH has to remain below 3. So whatever needs to be done for that, if it needs to be increased dose, then it is increased. If it is, sometimes we start medication and even with small dose, it becomes overcorrection, matlab over controlled. Then sometimes we may have Right. to increase the medication. So that is according to the levels we have to adjust. Right. And we can say that please follow your doctor's instructions, advices, because it is really important. Because sometimes we see patient like they are controlled on medication, and they say now our thyroid is controlled, they stop Right. medication. Right. So it is not that they need to stop medication, they have to continue the same dose, because their thyroid is controlled on medication. Without medication it will again increase, Again. because it's not a disease which like 1 week course you have taken or 1 month course you have taken and now it will remain controlled forever.
So it needs to be checked. And medicine, most of the time it needs to, you need to continue the medicine. Usually once started, it will not stop that early. You cannot stop. Right, agreed. Dr. Neelam, next query we have related to endometriosis. And usually जब endometriosis है तो और grading ज़्यादा है या levels high है, then doctor suggests to go for surgery, laparoscopy. So we have queries related to this, that laparoscopy कितना effective है to remove or to get rid of endometriosis, because people says that endometriosis has the tendency to appear again and again. So in this case, what you suggest, like as a senior surgeon? Hmm. Because basically endometriosis is a bad thing to have, because it causes, the main two problems with endometriosis is pain and infertility. So, and basically जो बोलते हैं ना, ये जड़ से नहीं जाता है. So once it has, and it has a grading, it's not that everybody will have same type of endometriosis. Somebody can have just small spots of endometriosis. Sometimes there can be endometrioma in one ovary, sometimes both ovaries are involved. And जो ऊपर नजर आता है वो अंदर उससे काफी ज्यादा होता है, because these things, the overall relationship of the uterus with tubes and ovary, that changes. That is why infertility happens. And because of adhesions and endometrioma, pain happens. So not all cases are same, we have to individualize. I'm not saying ki all patients they require surgery, but definitely certain categories of patients, suppose she has lot of pain, suppose there is a big endometrium of 5-6 centimeter and she has lot of pain, then we may will have to do the surgery. So if endometrioma size is less than 4 or 5 centimeter, and if it is only in one ovary और बाकी सब ठीक है and she wants to have baby, then sometimes हम लोग GnRH एनालॉग का इंजेक्शंस 2-3 मंथ दे के, एंड देन मे बी डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशन है, कि लेट्रोस देना है या ओवुलेशन इंडक्शन या फिर हमें आईवीएफ करना है, वो हम कर सकते हैं. बट सपोज इफ somebody has lot of pain, her lifestyle is getting, I mean to say, her day to day life is getting affected because of it, and it is too much of pain, then we have to do laparoscopic surgery. Because in laparoscopy surgery, basically endometrioma we want to do conservative surgery, जितना ovary बचा सकते हैं, and only cyst part is removed, so that we don't damage rest of the things. And ऐसा नहीं है पूरा ओवरी निकाल देंगे, बट अगर सपोज को आगे फर्टिलिटी प्लान करना है, एंड सपोज हर फैमिली इज कंप्लीट एंड शी इज मे बी 45 है या कुछ ऐसा है, एंड फिर पेन है, देन वी गो फॉर कंप्लीट सर्जरी. फिर उसमें ओवरी सेव करने का हमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज फिर से रिकरेंस होगा, फिर से प्रॉब्लम होगा. तो डिपेंड्स एज क्या है, उनको फर्टिलिटी अभी बेबी की जरूरत है या नहीं है, एंड मेजर सिम्टम क्या है, इनफर्टिलिटी है कि पेन है उससे ज्यादा. Right. तो बेसिकली इट हैज अ रोल टू प्ले. आई एम नॉट सेइंग कि, एंड बट ऐसा भी नहीं है कि हर एंडोमेट्रियोसिस में हमें सर्जरी करने का जरूरत है. Right. Small endometrioma, little bit spots, and she is not too much problematic, like हमें अल्ट्रासाउंड में पता चला है एंडोमेट्रियोसिस है, मोटा मोटी पीरियड्स ठीक हैं, then we can just leave it there and then go for fertility treatment. Right. And usually, after the removal of endometriosis, we can say that after surgery, doctor advises to plan your pregnancy fast. Why so? Yes, because it can recur. Because once you have removed the endometrioma, below. So basically, once endometrioma is removed, it can still recur. एंड अगर हम उसको सप्रेस करने का ही मेडिसिन देंगे, तो जो सप्रेस करने का मेडिसिन देते हैं उसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता है. सो शी कैन नॉट कंसीव इफ वी कीप ऑन गिविंग मेडिसिन टू सप्रेस द डिजीज. सो हम एंडो जब भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, आवर एम इज फर्स्ट टू रिमूव द एंडोमेट्रियोमा, एंड जितना उसका एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स है हमको फलगरेट कर दें, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम आफ्टर सर्जरी. 3 to 6 months is the best time where she can conceive. So we should not waste that time in suppressing the disease and giving more medicines or like medical management of endometriosis. So that is not the right thing. If you are going for surgery, then immediately after surgery you should
start trying for conception. एंड वो डिपेंड करता है कि अगर सपोज किसी का ओवुलेशन इंडक्शन से हो रहा है कि आईवीएफ से हो रहा है, दैट patient to patient differs. But that is true that you should not waste time. It's not that the laparoscopic surgery and you are planning to have baby after 2 years, then it may of no use. This surgery may of no use at Right. that time. And Dr. Neelam, usually people says that if you have chocolate cyst, Hmm. then it's really a uh, tough decision, because whether to drain it or whether to remove it. So, as a senior surgeon, what you suggest? Draining endometrioma has no role, because draining means there is a balloon, you are just puncturing it and taking out the chocolate fluid. So the wall is still there, it will refill within 48 hours or maybe 1 week or 10 days. Again, it will refill. So either if you take a decision like if endometrioma is less than 3 centimeter or maybe 3.5 centimeter and only one ovary is affected, rest follicles you are seeing, antral follicle count is good, other ovary is normal, then just leave it. But if you have put a scope inside the abdomen, then there is no point just draining it. Then it is best to remove the wall. At least वो आगे दोबारा बहुत जल्दी नहीं होगा. But draining only has no role. If you drain it, it is within 48 hours it will fill. 48 hours or maybe 7 days or so, because that is of no use. Then either you leave it or remove it. बट डॉक्टर नीलम, अगर हमें स्टिमुलेशन पे जाना है, लाइक फॉर आईवीएफ पेशेंट, एंड अगर चॉकलेट सिस्ट रिमूव हो रहा है, तो इज इट पॉसिबल कि वो हमारी ओवरीज या हमारी एग क्वालिटी या फॉलिकल्स को इम्पेक्ट करेगा? That is what I'm saying. If endometrioma is there, suppose there are two ovaries, antral follicle count is good. There is one endometrioma in one ovary, which is less than endometrioma size is less than 5 centimeter, 4 centimeter. Then you just leave that endometrioma and go ahead with your IVF or infertility treatment. But ओके. if you have put the scope inside the abdomen, अगर आपने एक बार लैप्रोस्कोप डाल दिया अंदर देखने के लिए, तो वो देख के उसको छोड़ने का कोई फायदा नहीं है. देन यू Then हैव टू better रिमूव इट. remove it. Then draining has no role. Draining will not cause any good to her, because then you just remove the endometrioma, but you have to take care and it has to be done by some expert doctor so that you don't destroy or damage the remaining ovary. जितना ओके. ओवरी बचा सकते हो, जितना आप अच्छे से बस उसका वॉल निकाल सकते हो, that should be done. Ovary should not be removed, only that part, that too should be done by a good surgeon who's good at removing it. So then राइट. they draining usually matlab we don't do. Maybe suppose you feel it will come in the way of ovum pickup, then sometimes for some maybe that moment only if you want to drain. So it doesn't अदरवाइज much नॉट of एडवाइजेबल. राइट. it will not be of any benefit. और जब आपने इतना बड़ा स्कोप अंदर डाल ही दिया, अंडर जनरल एनेस्थीसिया दे दिया पेशेंट को, इतना सब कुछ कर दिया, तो फिर वही चीज जो कि उसका कोई खास रोल नहीं है. Right. Okay. Actually, this question is very common, and that's why I just asked it. And viewers, please, आप लोगों ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा, और आज मुझे लगता है कि आपको अपने सवाल का ये जवाब मिला. नेक्स्ट टाइम, और if right now you are undergoing some kind of treatment and your doctor is advising the draining of the cyst, then please you can talk to your doctor and just mention that this may be the condition and I don't want to go ahead with only drainage. So please note this out. I think this is really very important point for those who all are suffering from chocolate cyst and still in this fertility journey. डॉक्टर नीलम, हिस्ट्रोस्कोपी को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं. एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि लेट्स डू हिस्ट्रोस्कोपी. सो वी एज अ पेशेंट के क्यों, वाई, क्या फायदा है इसका, ऐसा क्यों करना है? और एक बार हिस्ट्रोस्कोपी हो चुकी, मान लीजिए ऑलमोस्ट 4-5 months बिफोर, तो अब दोबारा से क्यों? So these all, I think these all we can say that doubtful queries are there in patient's mind. So please, over to you.
Hysteroscopy, I will not say that it is mandatory before IVF, but Hmm. sometimes it can give you added information. Like अगर if you are very much sure कि ट्रिपल लाइन बन रहा है और बहुत अच्छे से एंडोमेट्रियम क्रिएट हो रहा है, and it is very clear and the blood flow is good, then maybe it you can get away by not doing it. But Okay. in case you have slightest of doubt, like some small polyp if you are seeing, और कभी भी आपको कोई hyperechoic area नजर आ रहा है बीच में, पेशेंट का पहले कोई failed आई मीन टू से आईवीएफ Right. साइकिल है, प्रोलॉन्ग्ड इनफर्टिलिटी है, हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, जेनाइटल कॉक्स वगैरह का हिस्ट्री है, और पहले अगर Hmm. हिस्टोस्कोपिक नहीं हुआ है, देन इट इज बेस्ट, लाइक वी हैव टू इंडिविजुअलाइज। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट। एंड समटाइम्स वी, मतलब आई माई सेल्फ हैव सीन मेनी टाइम्स कि कभी कभी हमें कुछ एडेड इंफॉर्मेशन जो कि अल्ट्रासाउंड कभी कभी मिस कर देता है, उससे मिल जाती हैं, because not all patients they get ultrasound done from very good doctor, like they bring some बिल्कुल, reports which राइट। are not from some authentic place, they may say that is normal but it may not be. And all doctors they are not doing ultrasound in their own clinic with their own eyes. I have seen many patients, like I do my ultrasound, infertility ultrasound, and otherwise also on my own, except for level 2 ultrasounds. So there Hmm. are many times I have seen reports like उस बार normal लिखा है, but I am seeing something in the cavity. There is some hyperechoic area, flow is not good. So we always cannot rely upon some other report. जो आप अपनी आँख से देखते हो वो that is best. Me. And Right. so hysteroscopy is मतलब if you do it then it is good, but हाँ repeatedly 2 महीने पहले ही हुआ है from some good place where you can rely upon the report, किसी अच्छी जगह का हुआ है, तो it's not necessary that all patients should go for hysteroscopy, but yes it is added advantage है। And then आजकल तो ऑफिस hysteroscopy होता है, मतलब फॉरेन कंट्री में तो बहुत कॉमन है, हमारी कंट्री में उतना Right. नहीं है। So Hmm. without anesthesia, with a very small, very 2.9 mm scope होता है, जो without anesthesia आप डाल के चेक कर लेते हो, only under sedation और local देके। So you need not get admitted also, और long anesthesia वगैरह की भी जरूरत नहीं होती है, but थोड़ा सा patient selection होना पड़ता है। If somebody is very much apprehensive, then obviously it should be done under anesthesia, और अगर आपको लगता है कुछ operative करना पड़ेगा, but sometimes even scratching and all you can do, मतलब many of my patient like आपने हमने हिस्ट्रोस्कोपी किया, साथ में थोड़ा स्क्रैचिंग कर दिया, that also enhances fertility. Right, right. It can be. I think आजकल like in India also we are getting many cases related to this office hysteroscopy. Otherwise it was quite new. But आप लोगों को लगता है कि this is right thing to do. हाँ, like in our clinic we have office hysteroscopy. If I'm not saying for all patient I do in my own clinic, but patients who are convinced, who I feel are not that much apprehensive, like little bit of you have to convince them or tell the procedure Hmm. correctly to them. So ऐसा नहीं है, there are many who are convinced, because आप कितना भी कहो, cost is a factor. If you go to hospital, anesthesia charges, admission charges, all those charges also keep on adding. And if somebody is going for IVF, and then those charges, so that is the added thing. Added cost factor. Right, right. Understood. So, but Dr. Neelam, mainly जो आईवीएफ या एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन फेलियर्स के केसेस हैं, सो उसमें आप किस तरीके से ये लाइक यू सजेस्ट हिस्ट्रोस्कोपी जस्ट टू चेक कि हाँ भाई इतने फेलियर्स क्यों हुए? Yeah, that is must. If somebody has, I mean to say, repeated IVF failures, then we हम्म। have to thoroughly investigate the endometrium. And even if, because अब जिसमें ये होता है ना कि आपको कुछ भी कॉज नहीं है, then you have to check everything, because राइट। sometimes there are small small things which you can find out. मतलब हम जब आप बहुत सारे केसेस करते हो तो आपको पता चलता है अरे अल्ट्रासाउंड में तो कुछ नहीं था, बट अभी देखा तो छोटा सा पॉलिप था क्लोज टू द ऑस्टिया, लिटिल बिट ऑफ एडिशंस, बिकॉज स्मॉल स्मॉल थिंग्स कैन बी मिस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड. And as राइट। I've said, ki ultrasound, if somebody has 3D ultrasound, how good the radiologist is, from which place ultrasound has been done, कहाँ पे पहले IVF हुआ है. So
रिपीटेड में तो ऑब्वियसली यू विल इन्वेस्टिगेट एंड डू एवरीथिंग टू फाइंड आउट कि क्या रीजन है. रीजन, राइट. एंड आई थिंक पहले हिस्ट्रोस्कोपी को अलग मानते थे, लेप्रोस्कोपी को अलग, एंड नाउअडेज पीपल आर सेइंग कि आई हैव डन विद हिस्ट्रो लेप्रो. So what exactly is the difference between two, if I am going for individual thing, or if I am combining the both? It all depends कि basically laparohysteroscopy आजकल infertility treatment, if you are suppose going for infertility treatment, it is still not decided कि you will go for IVF or something like, then laparohysteroscopy is best. And if somebody has blocked tubes, suppose Hmm. किसी ने HSG कराया है या SSG कराया है, that is showing blocked tubes, और आजकल कम करते हैं बट फिर भी इफ यू प्लान टू हैव पीसीओडी पेशेंट में ड्रिलिंग भी आप करना चाहते हो, बिकॉज लैप्रोस्कोपी इज गोल्ड स्टैंडर्ड. लैप्रोस्कोपी मीन्स गोइंग इनसाइड द एब्डोमेन and visualizing your reproductive organs, your uterus, tubes, ovaries with your own eyes under magnification. So that is best. वही जो अपनी आंख से देखते हो that is best. Ultrasound can miss something or other tests can miss something. So laparoscopy is for that. You can really see tubes कैसी हैं, whether they are congested or whether they are swollen or not. कभी कभी एडिशंस होते हैं जो कि आप अल्ट्रासाउंड में पिकअप नहीं कर पाते हो, बट ऑन लैप्रोस्कोपी यू कैन डू. And sometimes it is therapeutic also, like you have done laparoscopy, you feel ki there are little addition, you can correct them. If suppose their tube is blocked at the end, you can correct that, you can open the tube also. And in PCOD patient, if the ovaries are very much enlarged, then you can do the drilling at the same time. And you combine it with hysteroscopy because patient is under anesthesia. Laparoscopy cannot be done without anesthesia, that has to be Right. done under general anesthesia. तो जब पेशेंट सोया हुआ है, लेटा हुआ है, तो अच्छे से आप एक बार नीचे से भी डाल के देख लो हिस्ट्रोस्कोपी. इफ देर इज सम प्रॉब्लम, समथिंग यू कैन डू. इफ सपोज किसी का HSG में पहले कोई कॉर्नोल ब्लॉक है, यू कैन जस्ट कैन्युलेट द ट्यूब एंड open it. So there are certain corrective measures, small polyp you can remove. So all those things, so it is best to combine for infertility patient. Laparohysteroscopy is best. Suppose somebody is directly going for IVF, so you are not bothered about tubes because in IVF tubes का इतना कोई बड़ी बात नहीं है. नहीं है, You राइट. just want to have good endometrium. आपको ovaries की position कहाँ है, whether adhesions are there or not, you are not that much bothered because that you can see on ultrasound की ovaries आपको नजर आ रही हैं या जो भी बात है. So basically in that case only hysteroscopy can be done. But Okay, if somebody is understood. going for infertility and they want to try naturally or with IUI, where tubes are, matlab it is mandatory to see the tubes. And even after, suppose sometimes tubes are open and still she is not conceiving, like we have seen Hmm. tubes on HSG or SSG, we have seen tubes that they are open and still after 6 months or 1 year, and her age is little less, she is not that old, 27, 28, maybe her AMH is good and other factors are not there, then you can plan laparohysteroscopy and look for any adhesion or anything which you can correct and then go ahead with the Right. treatment. Hmm. So both, like combination of both have different advantages, we can say. बट इफ यू आर गोइंग स्ट्रेट अवे फॉर IVF, तो लैप्रो का इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है. देन हिस्ट्रोस्कोपी हैज मोर एडवांटेज बिकॉज देन वी हैव टू हैव ट्यूबल, मतलब अंदर की लाइनिंग, हमें एंडोमेट्रियल Hmm. लाइनिंग भी वांट टू सी प्रॉपर्ली. एंड Right. ओवरी में तो वो एग्स बन जाएंगे तो वो तो निकाल ही लेंगे बाहर. सो बिकॉज tubo ovarian relationship is not that important. But if you are going to go for other things, मतलब अपार्ट फ्रॉम IVF, IUI प्लान कर रहे हो या फिर नेचुरली, बिकॉज इन दैट केस आप ज्यादा एग्स बना सकते हो ओवरीज में, बट अल्टीमेट प्रोसेस की एग अपने आप निकलेगा, ट्यूब कैच करेगी, स्पर्म अपने आप ऊपर जाएंगे ट्यूब में, तो दैट प्रोसेस वी वांट टू सी कि सब अंदर वैसे तो ठीक है ना, मतलब दैट प्रोसेस कैन हैपन और नॉट. Right. Right. That is more important for this. Understood. So we can say that combination of both टू हैव एडवांटेजेस. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आपको वैसे ही बोल रहे हैं कि आप ये दोनों करवा दीजिए, क्योंकि एट टाइम वी हैव दिस थिंग कि पता नहीं डॉक्टर ने दोनों चीजें क्यों बोल दी, ऐसा क्यों किया. नहीं, दोनों चीजों का अपना अपना है और सब पेशेंट पे अलग अलग चीज अप्लाई होती है. बट अगर आपने लैप्रोस्कोपी किया है तो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग वो भी तो देखना इम्पोर्टेंट है ना. तो राइट, दैट दिस इज शुड बी
एंड इट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इफ इट इज डन कंबाइंड वे, तो एक तो पेशेंट को तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, द सेम एडमिशन सेम समथिंग, एंड Right. combined charges also are not much different. Most of the places, I don't know about each and every place, बट Mhm. उसमें आपको एक एडिड, आप एनेस्थीसिया में हो, जब वो भी चेक हो गया, कल को अगर उसमें कुछ होता है तो देन अगर अलग से यू हैव टू undergo, and that will not be a complete this thing. Hysteroscopy is part of it's very important part of Right. infertility. हाँ, उसमें investigation. Investigation procedure, right. हाँ. So next time if your doctor is suggesting you for histro lepro histro or individual, then please think over it, because doctor is the best person to suggest you and guide you properly through your treatment. And as Dr. Neelam just mentioned कि हिस्ट्रो का अपना एडवांटेज है, लेप्रो का अपना एडवांटेज है, और अगर आप इनफर्टिलिटी की जर्नी में हैं तो इन दोनों का अलग से एडवांटेज है. प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ दीज प्रोसीजर्स, बिकॉज कहीं आपको किसी पॉइंट पे ये प्रोसीजर्स कराने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, सो दैट इट कैन हैव एन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ योर fertility journey, on your journey. So we can say that yes, lifestyle management is really important. Along with that, taking care of your reproductive system is also important. And viewers, if you are in Delhi NCR and you want to connect with Dr. Neelam Banerjee, please let us know, or you can directly contact her also. And I can say that हमें सबको पता है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज रियली इम्पोर्टेंट, बट सेशन में इतनी सीनियर डॉक्टर से सुनना और उनकी एडवाइजेस को अपने लाइफस्टाइल में लाना इज रियली इम्पोर्टेंट. So thank you, Dr. Neelam. Thank you so much for joining today for this important session on this important topic, because we know each and everything about lifestyle management, but again उन चीज़ों को रूटीन में लाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. तो आफ्टर दिस सेशन आई थिंक व्यूअर्स को समझ आ जाएगा कि ये सच में ज़रूरी है. It's very important. Basically यही सबसे ज़्यादा important है. If your lifestyle is good, तो आपको इतना डॉक्टर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, because we see बिल्कुल. PCOD patients like they are fat but they want to take medicine but they don't want to change their lifestyle, so that is not going to work. You have to have healthy lifestyle, because जो एक natural चीज को आप ज्यादा तोड़ने मड़ोड़ने से या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होने से कुछ नहीं होता है. Until ऐसे unless ही. you change your lifestyle, you have to have healthy. ठीक है, कभी कभार जंक फूड ये सब चलता है, बट इट शुड नॉट बी अ रूटीन प्रैक्टिस, बिकॉज जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है. वो कुछ काम करना या वॉट एवर यू डू इन लाइफ, अंटिल अनलेस यू आर हेल्दी, सो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं हो, बिकॉज ये सारी चीजें आपका मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं. बिल्कुल इसके साथ एग्जैक्ट. साथ इट्स नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, दे अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, एंड लेटर ऑन वो फिर मतलब इतना आपको पता नहीं चलता कि कब वो पानी सर से ऊपर हो जाता है. तो स्मॉल टाइम स्मॉल रहते चेंजेस आर इम्पोर्टेंट, वी कैन दे आर से दैट. इम्पोर्टेंट. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, यू स्टार्ट फीलिंग योर बॉडी लाइट, या आपको अपने में हेल्दी फील होता है, तो यू स्टार्ट फीलिंग गुड ऑल्सो, मतलब आपको मेंटली भी आप खुश रहते हैं अल्टीमेटली, तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. So please take a note and try to inculcate these small little changes in your daily routine. If you are really a yoga meditation person, then please let us know. Do connect with us for live sessions. And thank you, Dr. Neelam. Thank you, UNS, for this wonderful session. Thank you, ma'am. Thank you, Purnima. It was wonderful talking to you. Thank you, ma'am. Bye bye.